बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। पाकिस्तान की अमन 2025 एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इस दफ़ा 60 ममालिक ने इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया और सबसे इस दफ़ा की इम्प्रेसिव बात थी अमन डायलॉग, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ ममालिक के ऑफिसर्स को, अपने मुल्क के ऑफिसर्स को मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए देखा और सुना। और इसमें क्रेडिट मैं दूंगा पाकिस्तान नेवी को, जिन्होंने हमें अपडेट रखा। हम पाकिस्तान नेवी को देखते हैं, इसकी तारीख को देखते हैं, तो ये कुछ ख़ास लोग हैं। वो ख़ास लोग किस तरीके से हैं कि एक तरफ जो असबाब थोड़े हैं हिस्टोरिकली हमने देखा, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इनके एक्सप्लॉइट्स देखते हैं तो वो उन असबाब की निस्बत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कौम अपनी नेवी के ऊपर ना सिर्फ फख्र करती है बल्कि इसे आइडियलाइज भी करती है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ दो सीनियर नेवी के ऑफिसर्स मौजूद हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, जिनमें एडमिरल हारून साहब हैं, जो वाइस चीफ थे पाकिस्तान नेवी के 2007 के अंदर जिस वक्त ये एक्सरसाइज शुरू हुई। और उनके साथ मौजूद हैं कैप्टन अदीब सफ़वी साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, और आप हमारे चैनल पे इनको देखते हैं और काफ़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है हमें एजुकेट करने में और हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट से रोशनास कराने में। तो आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगा कैप्टन अदीब से। सर, 11 तारीख ख़त्म हो गई अमन 2025, तो कैसे देखते हैं इस दफ़ा की एक्सरसाइज को सर? शुक्रिया बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हर दफ़ा इस एक्सरसाइज में कोई ना कोई नई चीज़ ऐड की जाती है, जिससे जो एक्सरसाइज के मकासद हैं उनको हासिल करने में आसानी पैदा होती है। इस दफ़ा की जो एक्सरसाइज थी, इसमें दो बड़ी नई चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि तादाद पार्टिसिपेंट्स की पहली दफ़ा 60 के करीब पहुंची, जिसमें कुछ डेलीगेशन थी और कुछ नेवीज ने जहाज भी भेजे थे। बट मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, ये एक बहुत ही नुमाया अचीवमेंट है पाकिस्तान नेवी का कि जब बांग्लादेश नेवी के डेलीगेशन भी आया और उनके शिप ने भी पार्टिसिपेट किया। पहला मौका है जहां पर फौज ने या फौजी इदारे ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया और एक्सरसाइज में आए। इट हैज़ बीन अ रियल ट्रेमेंडस अचीवमेंट on the part of the naval leadership to invite Bangladesh Navy, and very graciously they accepted the invitation and they joined us. So ये दो चीज़ें बड़ी थी। डायलॉग में जैसे आपने जिक्र किया, लोगों ने अपने अपने पेपर्स तैयार किए थे वेरियस मौज़ूआत पर, उन्होंने उस चीज़ से रूशनास कराया और एक कलेक्टिव एजुकेशन हुई उन तमाम पार्टिसिपेंट्स की जो कि इसमें हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि हर एक मुल्क में अपनी एनवायरनमेंट होती है और उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है और उनके वेरियस कॉन्सेप्ट आते हैं नेवल ऑपरेशन एट सी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही नुमाया अचीवमेंट है जहाँ पर उन्होंने ये इसको शुरू किया और साथ में बांग्लादेश को हमने वेलकम किया। इट वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग टू सी सच एन अटेंडेंस। सर हारून, एक सवाल जो एक हमारे व्यूअर ने हमें भेजा कि सबसे पहले तो सर मैं आपकी थोड़ी सी उस पर राय जाऊंगा कि 2001 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन होती है, क्या हालात थे 2007 के अंदर जब नेवल कमांड जो है वो इस एक्सरसाइज को कंसीव करती है? आप कैसे देखते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिसपे इतना बड़ा वेंचर जो है वो शुरू होता है, इतनी बड़ी नेवल एक्सरसाइज शुरू होती है जो आज दुनिया की टॉप की एक्सरसाइजेज में से है? मैंने आपको पहले बताया कि 2001 में जब ये हमला हुआ है अफगानिस्तान पे, तो उस वक्त सिचुएशन वाज वेरी डेलिकेट in which the US really imposed on us to do very many things, which we should not have cowed down just like that. We should have, held on to it because we were not the ones who did that.
the 9/11 thing that happened in New York was not our doing. It was doing of somebody else. So it is a blame game done by the Americans normally, and they are never at fault, and they're always the heroes. That's the big problem. So in 2007, it was decided that let's have this exercise. A number of other countries were having it. Even our situation in the across the border, they were having their own admirals and conclave sort of a thing, in which the chiefs of various navies used to collect in New Delhi and other places. So we thought that we should have this exercise. It was thought of it, and then we decided how to go about doing it. It was a big exercise in the sense a lot of diplomatic effort was put into it. You direct talks between the chief of the naval staff as well as the other chiefs across the globe. And then we concluded that, yes, we can do it. Along with this, we wanted to put the educational aspect at Karachi under the auspices of Bahrain University. And that was done very amicably. A large number of papers were read and understood by various people. Representatives from Canada, representatives from USA, as well as Europe came and read out their papers, which was very interesting. So with this in the backdrop, I think it was an exercise done very nicely, very nicely. And Iraq was also coming into problems with the Americans, whereas there was no problem. They were propagating that there are weapons of mass destruction lying over there. It was not over there. So the media hype created by the West was bad for us, and Islamophobia was, picking up and being propagated around the globe, which was wrongfully done. And there are many people in the CNN, in Fox News, in BBC, who would transmit wrong things, absolutely incorrect, and based on conjecture, based on lies, based on wrong assumptions. That is what it is. And this was a situation where we could, salvage ourselves and do some shoring in this regard. So that is what it is. Another thing that I wanted to tell you was something very interesting. With the world in turmoil, you look at what is happening in South China Sea, Rohingya, and what is happening in Gaza, and now what is happening in West Bank, what is happening in Ukraine, what is happening in the countries in South America, the elections going on in East Europe, a number of countries trying to join the NATO, and all this. There's turmoil. There's a problem everywhere. And then on top of it, another aspect that has come up, which is being discussed heavily across the globe, is artificial intelligence. So that is and the only place where things remain silent are the oceans, are the seas. And then there are people who want to spoil everything out over there as well, which is a problematic area. Remember one thing, seas cannot be conquered. You cannot conquer the sea or the ocean or whatever. You can only learn the art of living over there, living under it or above it. That is all. Or maximum that you can do is domination of the sea. And that is what is of concern to us, that our ocean, Arabian Sea, should not be dominated by other people. We should be the ones who should be dominating. So that is why you want to go into collaboration, because you can't handle it single-handedly. You have to have
other friends with you. So that is another aspect that you may like to consider. سر ادیب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی سر نے کانسیپٹ دیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈومینیٹ کریں. سر ایک بہت اہم جو حصہ جس کے بارے میں نیول چیف نے بھی اپنی وزٹس میں کہا، ایڈمرل نوید اشرف نے، انٹر آپریبلٹی کی انہوں نے بات کی. تو کس طریقے سے امن ایکسرسائز مختلف جو نیویز ہیں جو آئیں، 60 نیویز ماشاءاللہ اس دفعہ آئیں تھیں اور آبزرورز اس کے علاوہ تھے، تو کس طریقے سے امن انٹر آپریٹیبلٹی جو ہے اس کو جو ہے فروغ دے رہی ہے؟ ویری ویری ویلڈ کوشچن. اور میں یہاں سے شروع کروں جہاں پر ایڈمرل ہارون نے بتایا ڈومینیشن کا. دیکھیں سمندر از اے ویری 2/3 گلوب کا حصہ ہے، بہت بڑا واسٹ ایریا ہے. اور سمندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے بیریئر اف یو ڈو ناٹ ہیو دا مینس ٹو یوز اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج. مطلب اف یو آر ناٹ اے میریٹائم پاور، اف یو ڈو ناٹ ہیو اے نیول پاور، بیکاز نیول پاور از مینس اور اس میں جو وہ جس کو آپشن ہے سمندر کا، اس کو آپ آپ کی اپنی کیا قابلیت ہے کو دیکھتے ہوئے then you invite your friends to share the responsibility of patrolling that area. اس ایریا پر جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پھر کولیبریٹ کرتے ہیں. اور وہی میں امن ایکسرسائز کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ ناٹ اونلی ان دی انڈین اوشن ریجن بلکہ اکراس دا گلوب نیویز وہاں سے آئیں اور انہوں نے اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنے طریقہ کار کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کیا. اور یہ ایک بہت ہی واضح میسج دیا فار دوز پیپل ہو وانٹ ٹو ڈومینیٹ کہ یہ اتنا آسانی سے نہیں ہو سکے گا. ہم اس کے اہل ہیں، یہ ہمارا سمندر ہے، اس میں جو بھی ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہوگا اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ چیز جو تھی اس ایکسرسائز میں بڑی واضح انداز سے سامنے آئی. جیسا کہ آپ نے نیول چیف کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی میسج میں بھی یہ کہا کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر فار کامن کاز. لڑائی جھگڑے اور کانفلکٹ کی بات نہیں کی بلکہ ان تمام آپریشنز کی بات کی جو کہ ہیومینٹی اور مین کائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے، لائک اینٹی پائریسی، ڈرگ اسمگلنگ، ڈرگ ٹریفکنگ، ویپنس کی اسمگلنگ. ان تمام چیزوں کو جو کیونکہ یہ یاد رکھیے ایک لاسٹ پروگرام میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پائریسی ایٹ سی جو ہے یہ اٹ از اے بگ کنٹریبیوٹری فیکٹر ٹو دی ٹیررزم آن لینڈ. بیکاز یہاں سے جو رینسم ملتا ہے وہ بلیک منی جو بھی جس انداز میں آتا ہے اس کو پھر جو ڈانس جس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر خشکی پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ اس کامن کاز کے لیے کام کریں اور ڈومینیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کے ایریا آف انٹرسٹ میں آپ کے اصولوں کے مطابق کام کریں. بے شک سر. سر ہارون آپ کی طرف آؤں گا. لاسٹ پروگرام میں آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی تھی. سر امن ایکسرسائز کس طریقے سے مدد کرتی ہے جو پاکستان کی فورن پالیسی مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنے میں یہ ایکسرسائز، یہ ڈپلومیسی، نیول ڈپلومیسی کمپلیمنٹ کرتی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کو؟ You see, there are few basic things that you must comprehend. One is that there is an interaction going on between all the nations that have participated in this exercise. That interaction, you project your viewpoints and you project your country. When you project your country, they project their own country, their own views. How do they look into this situation over here? And you come to an amicable solution for everything. The NEMA, National Institute of Maritime Affairs, carried out this seminar in Karachi two days ago. And there were a lot many subjects that they discussed and lot many papers were read over there. Similarly, there were question and answers, and then people try and understand the viewpoints of each other. And this is what is diplomacy. Diplomacy is that you send a message of friendship, that you send a message of peace, that you send a message that, look, we are together.
in peace, in progress, in harmony. So that is what is the main issue over here. The point that I would, like to further explain is that the papers read over there in Karachi at the barrier, and the auditoriums over there are very, very big, very, very important, and they carry a lot of message for each other. So that is very important. Uh, Before that, when the ships come, when the delegates come, and they are provided accommodation over here, they are transported from one place to another. They are then sitting down together, talking, about various subjects and all that. And the subjects that Safvi has pointed out are very much there. And one of them is also the human trafficking, apart from other things that he has mentioned. So human trafficking is another aspect which is being fought in Mediterranean by the Italians, the Spanish, and the other countries over there. But it is there. And similarly, there is the drug activity that taking place. There are drugs being produced in Gujarat, Indian Gujarat, and sent to New York, sent to Far East. That is what is happening. I mean, you can't help it otherwise. सर अदीब आपकी तरफ आऊंगा सर। हमारे साथ एक हमसाया है जो मालाबार एक्सरसाइज अपनी शो ऑफ करने में बहुत ज्यादा फख्र फील करता है, तो सर उसके लिए क्या पैगाम है ये अमन के अंदर, कैसे देखते हैं आप? They have understood देखिए everything. Excuse me, Savi, just a minute. They have understood everything. Now, what they're going to try is put you down, try and propagate things which are not correct, conjecture everything, and convey wrong things, incorrect. People, I have told you, biology, I've told you, biology makes a lot of difference. In their DNA, it is written, tell lies. And tell lies so many times, like what Goebbels used to say, so many times that people start believing. So that is what they're going to do. Sorry, I interrupted you. No problem. अगेन नेबर के हवाले से बड़ा वाजे हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि एनीथिंग दैट वी डू और वी ट्राई टू डू, उनकी तरफ से इसमें हमेशा रखना अंदाजी हुई है और उसका प्रोजेक्शन जो है गलत अंदाज से पेश किया गया। तो आई एम श्योर उनके लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किलात होंगी कि किस तरीके से इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो कि कामयाबी के साथ हमकनार हुई है उसको किस तरीके से कोई दूसरे रंग में पेश करे। बट द फैक्ट इज जो ममालिक हमारे साथ आए हैं और जिस अंदाज से इंटरेक्शन हुआ है और जो मकासद थे हमारे एक्सरसाइज के वो पूरे हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि दे विल हैव लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट टू ट्रिम आउट दिस थिंग कि क्या करना है। बहरहाल उनकी स्ट्रैटेजी है, उनके अपने मकासद है। दे हैव गॉट द मैसेज, जैसे कि हारून ने कहा कि इट विल बी वेरी मच क्लियर टू देम कि हमने इस अंदाज से अपने पाए तकमील तक पहुंचाया। बेशक सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर हारून। There's a thing known as exterior maneuver. Exterior maneuver, I hope you understand what is exterior maneuver. Sir. Exterior maneuver is what we have done as far as AMAN exercise is concerned. And try and bring it everybody, try and close to us and try and stop them going from anywhere else. So that is our exterior maneuver. सर ऐसे ही है सर। हारून आपसे आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सर, दुनिया दोबारा ट्रंप के आने के बाद प्रोटेक्टिव इकोनॉमी मर्केंटाइलिज्म की तरफ जा रही है। मर्केंटाइलिज्म का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ने अभी बढ़ना है। जिस तरीके से वो टैरिफ्स लगा रहा है, जिस तरीके से वो प्रोटेक्टिव इकोनॉमी, न्योलिबरलिज्म से अब दोबारा न्यो मर्केंटाइलिज्म की दुनिया में बात हो रही है। सर ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दुनिया रिएक्ट करेगी। अभी जर्मन की तरफ से भी एक आया कि अगर टैरिफ लगाए जाते हैं यूरोप के ऊपर
तो यूरोपियन यूनियन उसका खुल के जो है ट्रंप को जवाब देगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है कि एक टेंशन ट्रंप के आने के बाद लग रही है। ऐसे में सर, अमन 2025 एक्सरसाइज जो लोगों को साथ मिला रही है, इसके मकासद के लिए आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब होती है 2 साल के बाद, तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा? आप क्या देख रहे हैं सर? But I see that the whole world will be in more turmoil than what it is over now. जी। Chinese Chinese will be having problems with USA. Europe will have more problems. Canadians will have additional problems. South Americans will have already they have enough. They have spoken against the handling of affairs of Trump. They have spoken against it. Another part of the story is that South Africans, Egyptians, Libyans, and Nigeria, Ghana, all these countries are talking against the West. When you want to dominate, there is going to be a reaction to that. One has to be very careful, and then the domination has to be measured. In that case, the Americans used US aid. It was a farce. And what has happened now is Trump has stopped all this, finished all this. US aid is stopped. Good. Whenever US aid came, from whatever methodology, the colorful name was to develop universities, to develop, to strengthen the media, to strengthen this. But other hand, the money was going to wrong hands. Those people the people whom the West wanted to support, wanted their support. That is what it is. Next exercise is going to be there. Almost same countries will come, inshallah, and there will be more problems across the world. I hope some sanity prevails in Washington and some, brainstorming is done over there before they take steps which are not correct, not fair, not balanced. The moment you bring in instability anywhere, there are going to be people who are going to be talking again, who are going to be repulsing that. So that is what it is. Before you sum up, कि यूनाइटेड स्टेट्स का रोल थ्रू आउट जो हम लोग ने सर्विस में आने के बाद से देखा है अब तक और उससे पहले उसके बाद भी, इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स heavily relies on their war making industry. उनकी जो वेपन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है उसका दारोमदार इस चीज पर है कि मुख्तलिफ इलाकों में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। जब तक ये नहीं होंगे तो उनकी ये जो इंडस्ट्री है और उनकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये एग्जाम्पल था यूक्रेन का, देख लीजिए वहां पर उन्होंने कर दिया। जहां भी उनको मौका लगेगा, अभी ये जो ट्रम्प के फैसले हैं इन इसके नतीजे में जो झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बेसिकली द आइडिया इज दे मस्ट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वेपन्स एंड वंस दे प्रोड्यूस वेपन्स दे मस्ट बी एबल टू सेल इट। और हम जैसे ममालिक या और ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में जहाँ पर पैसा बहुत है वहाँ पर उनके खरीदार बैठे हुए वो उनको फिर बेचेंगे। एंड दिस इज द डायनेमिक्स दैट कंटिन्यूज। और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में वी मस्ट फोकस अगेन ऑन आवर कॉमन ग्राउंड की किस तरीके से उन लोगों इन ममालिक को आप यकजा करें और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कॉन्फ्लिक्ट से, बिकॉज इफ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड देन पीस विल प्रिवेल। जब पीस हो जाएगी तो डोमिनेशन खत्म हो जाएगी। तो दैट इज द वे आई लुक फॉरवर्ड कि हम कोशिश करें कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हम खत्म कर सकते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी तो इट विल बी पीस फॉर एवरीबॉडी। सर Another thing that is, Bilal, just hold on a minute. Another thing that is very important is, and it is laughable, you never know that Trump may backtrack on everything. All the tariffs and, there are problems already. The moment he starts facing, he'll slowly try to backtrack.
the way he's done it with Mexico and with Canada, achieved a few things during the negotiations. He might do it with China as well as Europe as well as. So backtracking is a possibility. Don't forget that part of the story. सर बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ट्रम्प प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन है, उसे पता है कि क्या ट्रिक ऑफ ट्रेड्स हैं. लेकिन सर एक चीज जो नजर आ रही है, 70s से जो न्यू लिबरलिज्म का जमाना आया, जिसमें इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, ट्रेड की बात हो रही थी, ट्रम्प की एक तो साफ पॉलिसी नजर आ रही है कि ये मर्केंटाइलिज्म को दोबारा जिंदा कर रहा है, प्रोटेक्टिव इकोनॉमी को कर रहा है. तो जाहिर बात है ये बहुत से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगी. और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पाकिस्तान नेवी की अमन एक्सरसाइज और इस जैसी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो यकीनन एक ठंडी हवा का झोंका होंगे, जिसके अंदर हम जो कोशिश कर रहे हैं 2007 से ग्लोबल नेवीज को साथ लाने की, करीब लाने की, ये एक पीस की तरफ एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, और कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान नेवी की तरफ से. और इसमें एक जो अहम बात हमें नजर आती है कि आईआर में हमें पढ़ाया जाता है कि दो तरह की थ्योरीज होती हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अंदर जो खराबी होती है उसे दूर करने की कोशिश करती है, और दूसरी होती है क्रिटिकल थ्योरी. तो पाकिस्तान नेवी की अगर आप 2007 से लेके 2025 तक की अमन एक्सरसाइजेस की तरफ देखें, तो हमें इसमें क्रिटिकल जो है थिंकिंग नजर आएगी, क्रिटिकल जो है बात नजर आएगी कि हम किस तरीके से अमन के लिए हमारी नेवी काम कर रही है. तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा सलामत रखे और पाकिस्तान नेवी दिन ब दिन तरक्की करे. हम अपने डिफेंडर्स के ऊपर बहुत प्राउड हैं, हमें फ़ख्र है पाकिस्तान नेवी के ऊपर. अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे सर हारून को और सर अदीब को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए.